वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान रेक्टर्स में। उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, होंगे अच्छे बड़े होंगे। कुदरत साल अफगान अच्छा, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। women stoned them to death for क्या? For adultery vantage with Palki Sharma। अच्छा भाई पलकी शर्मा कोई और है, चैनल वाली है। तो कब बोला हुआ ये तो हमें नहीं पता। कल ये न्यूज़ आई हुई थी उनकी, बिल्कुल ये बात की इस थी। पर वीडियो देखते हैं क्या सीन है, उन्होंने क्यों बोला हुआ है, क्या वजह हो सकती है। फिल्मर चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये पहले हम थोड़ा समझाएंगे कि ये वैसे सीन क्या होता है ये। For our next story, let's go back in time. It's the late 1990s. The Taliban is in power in Afghanistan. Girls are barred from school. Women are absent from public life. They cannot step out of their homes. If they have to, a man must accompany them. Also, they must be covered from head to toe. You may remember this blue burqa. It became the global symbol of the Taliban rule, a symbol of their oppressive regime. Now let's fast forward to 2024, to today. The Taliban is in power in Afghanistan. Girls are barred from school. 2.5 million girls and young women are out of school. Women are absent from public life. They're not allowed to work. They're not allowed to travel. They wear a burqa that covers them from head to toe. If they don't, there are consequences. As we speak, at least 800 women are being held in Taliban prisons. Others are dying by suicide. Women make up for 80% of recorded suicide attempts in Afghanistan. They account for almost 75% of the deaths. Essentially, it's all the same. Taliban 1.0, Taliban 2.0, it doesn't really matter. Women were oppressed then and women are oppressed now. In fact, they're worse off. Because the Taliban has made a new announcement. It comes from their supreme leader, this man, Hebatullah Akhundzada. He said the Taliban are reintroducing old methods, public flogging and stoning to death. They're bringing these back, flogging and stoning to death. And who will be the victims? Who will face this punishment? The women of Afghanistan, they will be flogged and stoned to death if they commit adultery. And this is only for women. मेन के लिए भी है, ये दोनों के लिए है, नॉट जस्ट किसी के लिए भी है, चाहे ऊपर हो नीचे हो, मैन हो फीमेल हो, किसी के लिए भी है। So this announcement hardly makes a difference, but it shows you one thing, that the Taliban have not changed. They ruled Afghanistan from 1996 to 2001, and they came to power again in 2021. They took over Kabul, they formed a government, and they marketed themselves as a new Taliban, the Taliban 2.0. It was said to be different, more moderate, whatever that means. What is a moderate terrorist? But the world lapped it up. Look at their first press conference, for example. This is what their spokesperson said, and I'm quoting the Taliban spokesperson. Our sisters, our men have the same rights. They are going to be working with us, shoulder to shoulder with us. They promised to not repeat the cruelties of the 90s. They said women and men should have equal rights. Yet nearly 3 years later, here we are. Forget equal rights. Women do not have any rights in Afghanistan. In the last 2 years, the Taliban have issued 80 edicts. 54 of these directly targeted women and girls. So what they sold to the world was a lie, a marketing gimmick to rebrand themselves. They have the same old draconian policies. They practice the same gender apartheid. Which brings us to the country, Afghanistan. It's a country on the verge of collapse. 97% of its people live in poverty. 97%. 60% need humanitarian assistance. 20 million people face hunger. People are selling their organs. Parents are selling their children, all to afford a meal in Afghanistan. But that is not the Taliban's priority. Their focus is on the 14 million women and girls. How to deprive them of rights, and how to erode all the gains they made in the last 2 decades. A United Nations report says excluding women is costing the Afghan economy almost $1 billion. That's 5% of their GDP. Yet the Taliban continues to remove them from public life, and the world could not care less. They pretend it's not happening. They failed Afghan women in the 90s, and they failed them again today.
तो ये थी वीडियो ये एक बात अगर कही ये बिल्कुल जहाँ तक देखी जाए बिल्कुल रियलिटी ये बात कल उन्होंने की थी ये जो उनका जो क्या कहते हैं जो अमीर है बड़ा उन्होंने ये बात की थी लेकिन बाद में वापस रिमूव भी कर दिया तालिबान के जो वो होते हैं पेज है पता नहीं क्या जो उनका मतलब ऑफिशियल है वहाँ से वापस हटा दिया कि जब उन्होंने ये बात की थी कि हम वापस जो है ये सब रूल लाएंगे। लेकिन देखो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री अगर देखी जाए अफ़गानिस्तान की 100 साल हिस्ट्री अगर देखी जाए आपको ऐसे खूनख्वार हिस्ट्री मिलेगी कि बहुत कम कंट्रीज ऐसी मिलेगी। अगर तालिबान ऐसे रहे जिस तरह के ये रहे तो इन लोगों को 1996 वाले जो है टाइम को याद कराना होगा। ये उस टाइम भी खुद को बहुत मजबूत समझते थे लेकिन फिर एक मजबूत समझते थे ना खुद को बहुत मजबूत समझते थे लेकिन फिर एक इनकलाब आप कह सकते हो कि बहुत चेंजिंग आया इन लोगों की रूल खत्म हुआ तो अब भी हो सकता है इनसे अच्छे गए बहुत ही मतलब से गए हुए तो ये लोग भी जा सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों को जो है जो जनता होती है आवाम होती है उनको साथ लेकर जाना होगा। बेशक अब रूल बनाओ ये जो इन्होंने एंकर ने कहा कि ये सिर्फ फीमेल के नहीं फीमेल के लिए नहीं होगी ये मेल के लिए भी ये रूल है लेकिन एक तरीका होना चाहिए रूल है बेशक आप लॉ मतलब कर सकते हो लेकिन अब ये कहेंगे कि उन लोगों के सामने ऐसे अगर बात की जाए एक कॉमन सेंस वाली बात है ये मैं हमारे व्यूअर्स भी इससे एग्री करेंगे। एडल्ट्री की बात अभी की गई ये अगर ये जो रूल है जिस तरह रूल दिखाया गया ये रूल अगर नहीं करेंगे तो इससे जो है फिर और भी बढ़ेंगे। अगर ये रूल सिर्फ अप्लाई ही करेंगे अगर ये करेंगे भी नहीं तो लोग इसका सोचेंगे भी नहीं। तो इसका ये फायदा तो है कि ये इसका सोचेंगे नहीं। ये जो सजा देते हैं जिस तरह की इन्होंने बताई थी एंकर ये रेप वाले को देते हैं जब रेप करते हैं उनके तो उनके लिए ऐसा ही सजा होती है शरिया लॉ में। तो अब फिर वो लोग सोचते ही नहीं इसके बारे में फिर ये अगर ये पनिशमेंट अगर उनके माइंड में ये हो कि पनिशमेंट हमें मिलेगा तो वो लोग इसका सोचते भी नहीं है। तभी जहाँ तक फीमेल की बात है फीमेल को जो है स्टडी वगैरह जो मतलब जो नॉर्मल लाइफ होती है वो तो होनी चाहिए। तो 2024 चल रही है चाहिए लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो तालिबान अगर चेंज नहीं हुए अगर ये अभी के वक्त के साथ नहीं चले तो नहीं चल पाएंगे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा वुमेन्स को अलाउ करना पड़ेगा फॉर द स्टडी फॉर द वर्क और दूसरा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉवर्टी इनको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है और भी बहुत काम है जिस तरह के एंकर ने एक बात की थी कि पॉवर्टी हो गई और बहुत सारे इनको काम है वो काम करो भाई जरूरी करना पड़ेगा। ये फ्लॉग वाली बात नॉट जस्ट फॉर वुमेन है ये फॉर मेल्स भी है फॉर एवरीवन है जो भी रेप में मुलविस हो जो भी उन्होंने ऐसा काम किया हो जो कि बिल्कुल एक अनइथिकल हो या इररिलेवेंट काम हो उसके खिलाफ जो है उनके जो पनिशमेंट है वो बहुत सख्त होते हैं। तभी अगर देखी जाए अभी अफगानिस्तान में लाइक 98% तक जो है इस तरह रेप वाला सीन तो बिल्कुल होता ही नहीं हमारे मतलब 98% तक मैं प्रीटी मच श्योर कि इस तरह के सीन नहीं हो रहा है। द रीजन इज पनिशमेंट। कोई जुर्रत नहीं कर सकता इसके बारे में। अगर कोई पनिशमेंट होगा तभी लोग उसका सोचेंगे नहीं। अगर पनिशमेंट नहीं होता है उनको अदालतों में पेश करते हैं प्रिजन में छोड़ देते वो फिर आम होता है पेशियां होती है 2 दिन बाद जो है बेल पे तालिबान के यहाँ पेशी नहीं होती 2 दिन बाद जो है वो बेल पे छूट जाते हैं। इस तरह तो फिर वो और भी काम इसी तरह चलते रहेंगे। अगर पनिशमेंट होगा एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा इस चीज के लिए तो फिर कभी नहीं हो सकते। आप लोग को समझना चाहिए हर एक को समझना चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इस चीज के लिए होना चाहिए जो कि रेप हुआ कोई किसी को मार दे इस तरह के लिए जो है होना चाहिए। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब साथ में जो बेल आइकन है उसे मिल रहा है। स्वाभाविक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।